हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथनिस्ट। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एरिया का आखिरी टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, एरिया ऑफ सर्कल और उसके साथ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान से सुनना। एंड इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, how to get the area of a circle। अब इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे देश के साइंटिस्ट है, उसने इसको कैलकुलेट करके निकाला। पर तुम्हें वो सब जानने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हिस्ट्री है और हम यहाँ पे मैथ करेंगे। मैं तुम्हें एक बेसिक नॉलेज देता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी क्लास की मैथ के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सपोज दिस इज ए सर्कल, ओके। अब लेट अस डिवाइड इट इनटू इक्वल सेक्टर। व्हाट इज ए सेक्टर? एक सेक्टर इज ए पार्ट, a sector is a part where suppose this is the center, this is the radius and this is the radius। जो पार्ट ये दो रेडियस अलग करता है उसे कहते हैं सेक्टर। दिस इज सेक्टर, ओके। दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। चलो इसको हम बहुत सारे अलग छोटे छोटे सेक्टर में ड्रॉ करते हैं इक्वली। पहले ऐसा एक लाइन खींचो सेंटर से, हाँ सब सेंटर से, फिर ऐसा एक लाइन। ऐसे अगर हम इक्वल, मैं हाथ से कर रहा हूं, मैं इसका एक इमेज ड्रॉ कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा, इसके एक इमेज में इसके साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग देख लेना। अगर इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सेक्टर में डिवाइड करें तो ये जो इसका पोर्शन, ये बहुत सारे और भी छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता है। जैसे अर्थ का सरफेस, अर्थ ऐसा है और हम जहां पे रहता है उसको हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, उसको हम फ्लैट देखते हैं, बस इस पोर्शन में, क्योंकि हम एक बहुत बड़े सर्कल के ऊपर है, तो जिस पार्ट में हम रहते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं। वैसे ही अगर हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो इस पार्ट को या इस पार्ट को हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो ये हो गया एक ट्राइंगल। ऐसे जितना ज्यादा पार्ट उतना छोटा लाइन, उतना प्रॉपर ट्राइंगल। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ऐसा एक फॉर्म आएगा। ध्यान से देखना, तो ऐसा एक फॉर्म आएगा, ऐसे ट्राइंगल सब ऐसे एक के बाद एक रहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं इसका इमेज साथ में दे दूंगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारे ट्राइंगल एक के बाद एक आएंगे, जिसका हाइट होगा r, क्योंकि ये दो लाइन बहुत आसपास है, इसका हाइट होगा r। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके ऊपर है तो इसका हाइट होगा r। और इसका लेंथ होगा, देखो पूरा ट्राइंगल का लेंथ है, सर्कमफेरेंस है 2 पाई r। अब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों मिला के 2 पाई r है, तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, लेंथ क्या होगा, 2 पाई r बाई 2 इक्वल टू पाई r। तो इसका एरिया कितना होगा, इस पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल का, पाई r लेंथ इंटू हाइट r इक्वल टू पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल। समझ आया? तुम लोगों के लिए बस इतना ही काफी है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या है एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। गॉट इट? वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एरिया ऑफ ए सेक्टर। मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या है? सपोज दिस इज ए सर्कल,
and two radius, this one and this one, cut this portion of the circle. This is a sector. Okay. Now how to figure out the area of the sector? Suppose this is angle theta and the radius of the circle is r. Okay. So we know from the formula. Now what is the angle created by the circle on the center? 360 degree. So for 360 degree, we know the area is for 360 degree same as circumference. For 360 degree, the area is pi r square. So for 1 degree, using unitary method, the area is pi r square by 360. So for theta, the area will be theta into pi r square by 360. So here the area will be theta by 360 into pi r square. As simple as that. So for an angle theta, the area of the sector is theta by 360 into pi r square. Square unit. यूनिट इंपॉर्टेंट है. यूनिट के अलावा तुम अगर लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे. ठीक है, ध्यान रहे यूनिट जरूरी है. ओके, समझ आया? So the formula for the area of sector is theta by 360 into pi r square. Now using this formula, what is the area of a semicircle or quadrant of a circle? Now semicircle क्या होता है? This half circle. इसका देखो, ये है सेक्टर, ये है एक रेडियस, ये है एक रेडियस. What is the angle created here? 180 degree. So simple, the area is, let the radius is r. So area is 180 by 360 into pi r square. Simple, pi r square by 2. And for quadrant of a circle, what is the quadrant of a circle? Let's draw a diameter here and here. So the 1/4 part of a circle is the quadrant of a circle. So what is the angle here? They are perpendicular bisector. So this is 90 degree. So what is the angle created by this sector? What is the area of this sector? 90 degree by 360 into pi r square 4. So pi r square by 4. This is the area created by a quadrant of a circle. तुम लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करना तो ज्यादा आसानी होगी. उससे तुम बार बार बहुत सारे फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ नीचे दे दूंगा कहीं पे, तुम लोग देख लेना. ठीक है, चलो यहाँ पे पहले मैं और एक चीज समझा देता हूं सेक्टर के लिए. सपोज दिस इज अ सेक्टर. ओके, द एंगल इज थीटा. दिस इज एंगल थीटा. ओके, रेडियस इज r. नाउ लेट्स सी, दिस इज a sector, but this part, this whole part is also cut by the two radiuses, and here we are getting another angle whose value is 360 minus theta. So what do we call this? The smaller sector we call minor sector, and the bigger part we call major sector. Okay, got it? The smaller portion of the circle we call it the minor sector, and the bigger portion we call it the major sector. Now get to some questions. Some questions, okay? Because they are important. We have to solve questions. First question is, find the area of a sector of a circle with radius 21 centimeter, center angle 120. अब यहाँ पे जब ओनली सेक्टर बोला तो माइनर सेक्टर ही समझ लेना. ठीक है, और एंगल नहीं तो एंगल तो बोल ही देगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा
सेक्टर बात बोल रहा है। तो फाइंड द area of a sector of a circle with radius 21 semi. So r equal to 21 semi and theta equal to 120 degree. So area of the sector equal to 120 by 360 into pi r square. r की जगह हम 21 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट है, यूनिट हमेशा देना 3, so 1 by 3 into 22 by 7 into 21 स्क्वायर को मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, 21 into 21 क्योंकि स्क्वायर है, 21 into 21 में लिख सकता हूं। ध्यान से देखो 7 3 20, 7 3 3 कट हो गया, ठीक है। तो 22 into 21, 22 into 20 कितना होता है 420, 440, 22 into 20 कितना होता है 2 2 40, उसके साथ 21 और क्या करना है, क्या करना है, ठीक से देखो, ठीक से बोलो, हमें बस 22 ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 के लिए, सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? इज दिस क्लियर? सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं नीचे कहीं पे क्वेश्चन दे दूंगा, डोंट वरी, ध्यान से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग and the area swept by 15 minutes. So the minute hand of a clock is 14 centimeter long. Suppose this is 14. Now you can say, sir, this is not 14. The minute hand should not touch the circumference. But here we will take this as our radius, the minute hand. So this is 14. Now the question is, find out the area swept by it in 15 minutes. Listen very carefully. A minute hand finish a rotation in 60 minutes. So 60 minutes it covers 360 degree. Okay. So in 1 minute it will cover 360 by 60. Okay. So in 15 minutes it will cover 360 by 60 into 15, 6 equal to 90 degree. Okay. So minute hand कितना आएगा, कितना कवर डिस्टेंस कवर करेगा 90 डिग्री 15 मिनट्स में, तो ये मिनट हैंड यहां तक आएगा, दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो हमें इसका एरिया निकालना है। दिस इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा 90 by 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 by 7 इंटू आर स्क्वायर, 4 2 11, so we can write 11 by 2 into 7 into 14 into 14, right? This 2 and this 7, so 2 7s are 14, 7 7s cut हो गया, 40 into 11, 40 into 10 140 and another 14 equal to 154. So 154 centimeter square. That is the area swept by the minute hand of the clock in 15 minutes. Clear है? Is this clear? I hope you guys understand it. अगर समझना है तो पॉज करके या रिवाइंड करके या फिर से देख लेना, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर से पूछना, कमेंट करना, मैं बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सर्कुलर गार्डन हैज अ रेडियस 28 मीटर। A sector of angle 45 degree is used for growing flowers. Find the area of the remaining portion of the garden. The circular garden has a radius of 28 centimeter. So let's draw a circle. Radius of 28 centimeter. 28 centimeter or meter? Meter. Okay. A sector of angle 45 degree is used for growing flowers.
48 डिग्री का एक सेक्टर लिया हुआ है फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स. ओके, दिस इज फॉर फ्लावर्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन. तो हमें बस इस चीज का एरिया निकालना है. वी कैन डू दिस इन मोर देन वन वे. फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है सिंपल, हम पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे 45 डिग्री का, उससे माइनस कर देंगे. और एक क्या है, हम ये एंगल निकालेंगे. दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. ओके, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. इसका एरिया निकालेंगे डायरेक्ट, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल निकल जाएगा. ओके, यू कैन डू इट इन बोथ वेज. तो मैं दूसरे तरीके से करता हूं ताकि स्टेप कम हो. इससे rest of the angle at the center of the circle equal to 360 minus 45 degree equal to 5 1 315 degree. So area of the remaining portion equal to into 22/7 into 28 into 28 meters square. Okay, got it? 7 4s are 28. Can we cut these two? 45 से कट होगा? Yes or no? 45 4s are 180. So 45 8s are 360. 45 and 8. 0 32 36. So 45, this is 8. अब 360 से हमने 45 माइनस का 315. So this is 45 into 7. Okay. So 4 2s are 8. 2 11 are 22. So what do we get? 77 into 28. Now we have to multiply it. I am not using any multiplication tricks. 56, we have 5 in hand, 14, 96. 6, 9, 1. 6. So 2156 meters square. This is the area of the remaining portion of the garden. Okay. Sorry. I hope you guys get it. This is a pretty easy question. You can also do it in find the area of the whole circle. Then you can subtract the area of the 45 degree sector. Okay. Very good. Now to the next question. So our next question is, the sector of a circle has a radius of 14 centimeter. Let me clean the board first. The sector of a circle has a radius 14 centimeter. Its area is 77 centimeter. So here the area is given. Suppose this is the sector. So this area is 77. Okay. What is the question? Find the angle of the sector, and second question, the length of the corresponding arc. So we have to find theta, then we have to find the length. So to find the length, we have to find theta. Let the angle equal to theta. So we can say theta by 360 into 22/7 into r square. मतलब 14 into 14 equal to 77. So what can I do? 2 7 2s are 40, 11 2s are 77, 11 7s are 77, 11 2s are 20, 11 7 77, 7 2s are 40. So
theta equal to, now listen, 360 by 2 into 2 into 2. So if we cut, we get 180. If we cut, we get 90. If we cut, we get 45. So theta equal to 45 degree. So angle is 45 degree. And length of the arc क्या होगा? Length of the arc equal to theta equal to 45 by 360 into 2 into 22 by 7 into r. Got it? 45 by 360 into 2 into 22 by 7 into r. Got it? 45 8s are 360, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 11s are 22, 2 7s are this, 7 7s cut. So 11 meter or centimeter, unit is very important, centimeter square. So this is centimeter. So length of the arc is 77, 11 centimeter. Okay. So यहाँ पे एंगल निकलना था, हमें एरिया दिया हुआ था. दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम सारे समझ में आ गए. और जो भी क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन पेपर और लास्ट में ऐड भी कर दूंगा. और अगर तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास शायद मैं सोचता हूँ शायद मैं प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, न्यू चैप्टर है जिसे तुम पहले कभी नहीं किए हो. ठीक है, तो मिलते हैं मंडे विद न्यू क्लास. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.